Zoom हो रहा है। Okay, perfect. So, very good evening to all of you. Can they hear us? Very good evening, Somanpreet. Very good evening to other students as well. So, today, your ND is just about the corner. It's on coming Sunday. So, first of all, good luck for that. और हमारे कुछ questions बचे हैं. Let us first complete it, and then we would have covered all the major important topics that have to be there in the NDA. So wish you good luck, and then let's complete it. तो हम कर रहे थे optics. Clear, good, शाबाश, चलो. We were doing optics, and optics में हमारे 40 questions हो गए थे approximately कल. So let us do with the question number 41. Question is, which one of the following can be used to focus sunlight? Which one of the following can be used to focus sunlight? फोकल पॉइंट पे लाइट को पहुंचाना है, और एक थोड़ा रे डायग्राम से समझें इसको. अ पैरेलल रे ऑफ लाइट, सन से लाइट कैसे आएगी? पैरेलल. अ पैरेलल रे ऑफ लाइट नीड्स टू बी फोकस्ड एट इट्स फोकस पॉइंट. दिस इज एफ, दिस इज द फोकस. नाउ आई थिंक क्लियरली दिस मिरर जो आपने लगाया है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? कनकेव मिरर. कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर. सो प्लेन मिरर तो बिल्कुल फोकस नहीं करेगा, कनकेव लेंस तो बिल्कुल डाइवर्ज करेगा, कन्वेक्स मिरर भी डाइवर्ज करेगा. The only possibility is that the answer will be choice C, that is concave mirror. Clear? Which of the following can be used to focus sunlight? Out of these options, it will be concave mirror. Convex lens भी use किया जा सकता है. Okay? Convex lens is also a focusing lens, so we can also use the convex lens. Very good evening. Let's go to the next question. Okay, it's a statement based question. Let us talk about this now. Let's read this. Consider the following statements. In a periscope, prisms are used to turn the incoming light through 90 degrees. See, it is true. आपको याद होगा ऑलमोस्ट इन द डे वन जब मैंने ऑप्टिक्स शुरू किया था, बोला था कि जो पेरिस्कोप का प्रिंसिपल है उसमें हम मिरर्स की जगह प्रिज्म्स भी लगा सकते हैं, एंड वी यूज द कंसेप्ट ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो यस, इट इज ट्रू, दिस विल बी यूज्ड. दिस इज ट्रू, है ना? इन अ पेरिस्कोप, प्लेन मिरर्स कैन आल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिज्म्स. दैट इज आल्सो ट्रू. वी हैव स्टडीड दिस. Let's go to the third point. The loss of intensity of light is more in the case of reflection by mirrors. Students, let me tell you, this is also true. ये बल्कि वो सारी चीजें बोल रहा है जो मैंने तुम्हें बताई थी स्टार्टिंग ऑफ दिस कोचिंग में, जब से हमने कोचिंग शुरू करी है ना, आपकी एनडीए की. So all the points are true, 1, 2 and 3. Based on that logic, which of the following statements given are correct? Answer is choice C. And that is all of the above, all of this. Okay? जिसको पेरिस्कोप थोड़ा सा भूल गया, मैं फटाफट रिवाइज करा दूं क्योंकि हमारी कुछ और ऑडियंस भी है जो बाहर से जुड़ी है. पेरिस्कोप is an optical instrument which is kind of this shape. A ray of light enters into this. यहाँ से होएगा total internal reflection. ये गया total internal reflection. यहाँ से फिर reflection होगा. कितने एंगल का रिफ्लेक्शन हो रहा है? 90 डिग्री का. कितने एंगल का रिफ्लेक्शन हो रहा है? 90 डिग्री का. तो ये प्रोसेस इट कैन बी अचीव्ड आइदर बाय पुटिंग द प्लेन मिरर्स और इट कैन बी आल्सो अचीव्ड बाय पुटिंग द प्रिज्म्स, एंड प्रिज्म्स विल हैव लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. अभी क्लियर हो गया? किसी को अगर डाउट था कि पेरिस्कोप क्या होता है, दिस इज हाउ यू सी द ऑब्जेक्ट एट सम हाइट. क्लियर है जी? चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Which of the following are true? Again, it's a statement question. Which of the following are true regarding the image formation with the help of mirrors? Okay. A concave mirror can give a diminished virtual image. A concave mirror, I think it never gives the diminished. It might give the diminished, but it never gives the virtual image. Concave mirror कभी भी virtual image नहीं बनाता. मैं थोड़ा सा उसका रे डायग्राम दिखा दूं आपको.
अच्छा, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी रे डायग्राम के लिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ. What are the possibilities for the image found by the concave mirror? ध्यान से देखो. This is a concave mirror. Image could be placed here. The worst, I mean the maximum what can happen is same height की image बन सकती है यहाँ पे, है ना? Same height की image बन सकती है यहाँ पे. तो same height बना, diminish तो कभी नहीं बना. एक और possibility है concave mirror का. एक और possibility है, अगर हम focal point से बहुत ज़्यादा दूर रख दें, so the ray of light will go like this and the image will be formed somewhere here, पीछे की तरफ. So either it is forming inverted or of the same size. Virtual image भी बनाता है concave mirror, वो भी देख लो. Virtual image भी बनाएगा concave mirror, ध्यान से देखो. A ray of light goes like this. It goes with the concept of the total internal reflection. ये लाइट कहीं कभी जाके मिलेंगी नहीं, तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी दूसरी साइड पे जाके. आया समझ में? यहाँ कहीं बनेगी एक वर्चुअल इमेज. और जब वर्चुअल बनेगी फिर डिमिनिश तो कभी बनेगी नहीं. जब वर्चुअल बनेगी डिमिनिश तो कभी बनेगी नहीं. तो ये कंसेप्ट को समझाते हुए अब हम राइट आंसर ढूंढे. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इमेज फॉर्मेशन का. A concave mirror can give a diminished virtual image? I don't think so. So statement 1 तो कभी चॉइस का आंसर रहेगा नहीं. कहाँ पे है वो चॉइस जिसमें स्टेटमेंट 1 नहीं है? टेक्निक सीखी आपने आंसर देने की. हमें पता लग गया स्टेटमेंट 1 गलत है. We know statement 1 is wrong. If statement 1 is wrong, pick up the choices in which statement 1 is not there. And clearly question देखो, D is the answer then. So we select the answers from the codes given below. 2, 3 and 4 are correct. तो 1 तो गलत हो गया. 2 देखो, a concave mirror can give a real image. अभी देखा, yes it can. A convex mirror can give a virtual image. True. In fact, convex mirror always gives the virtual image. Convex mirror का रे डायग्राम बनाओ. Convex mirror का रे डायग्राम बनाओ. देखो इधर. Convex mirror हो जाएगा, it is curved out. We are talking about mirrors here, students. So let us say one object is placed here. A parallel ray of light will be reflected. It appears to pass through its focus. Okay. One parallel ray of light will be coming and striking back. तो यहाँ से ये strike करेगा, यहाँ कहीं image बनेगी एक यहाँ पे. Diminished image बनाता है. Convex mirror कल भी सीखा था हमने. Convex mirror always makes the diminished image and moreover it always makes the virtual image. A convex mirror cannot give a real image. सही है. Last statement. A convex mirror cannot give a real image. तो ये रे डायग्राम आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए concave mirror का और convex mirror का. Based on this, answer to this question is D. 2, 3 and 4. These are the correct statements. Concave mirror can give a real image. A convex mirror can give a virtual image, it does. A convex mirror cannot give a real image, so it's all fine. Understood? How the images are formed? Question तो हो गया. Understood how the images are formed in the concave mirror and convex mirror? Yeah, मैंने बनाया तभी confusion तो हो गई. तभी मैंने बनाया है. ठीक है? Convex जिसको confusion हो रहा है सुन लो. Convex का बस ये डायग्राम याद रखो. कन्वेक्स हमेशा बनाएगा वर्चुअल इमेज. कन्वेक्स हमेशा बनाएगा डिमिनिश्ड इमेज. ये डायग्राम याद रखिए. कनकेव इमेज रियल बनाएगा या वर्चुअल बनाएगा. लिख लो अभी. कनकेव इमेज रियल बनाएगा या वर्चुअल बनाएगा. बट अगर कनकेव वर्चुअल बनाएगा, इफ कनकेव मेक्स द इमेज वर्चुअल, देन इट इज ऑलवेज मैग्नीफाइड. इट विल नेवर बी डिमिनिश्ड. बस इतना याद रखो, सफिशिएंट है इंडिया के लिए. बाकी और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उसमें और प्रैक्टिस होगी. मैचिंग का है क्वेश्चन. मैचिंग का क्वेश्चन है, which of the following pairs are correctly matched? Power of lens, it is measured in diopter. So जो सही है उसको टिक मारो. ये तो सही है. Total internal reflection,
second point, sorry, total internal reflection. It is a concept which is used in the communication of optical fiber cable. सही है, क्योंकि लाइट से सिग्नल भेजना है, तो सही है. Change of focal length of lens with color leads to chromatic aberration. ये भी सही है. Chromatic aberration आपको समझाया था. क्या था chromatic aberration? हर लाइट के लिए, हर वेवलेंथ के लिए the focal length of the lens will be different, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा हर वेवलेंथ के लिए. So based on this, all are correct. तो ये जस्ट नॉलेज के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है. All are correct. 1, 2 and 3. Got this? Hope you will remember this. ये ऑप्टिकल फाइबर पे क्वेश्चन आ सकता है एनडी के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो पूछते रहते हैं जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट में, जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में. ओके, चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. मैच द फॉलोइंग. आई का जो डिफेक्ट है हमने किया था, हमने कल समझा था व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया. मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट डिफेक्ट, शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया. मायोपिया में रेटिना से पहले लाइट आ जाती है, तो उसको रेटिना तक पहुंचाने के लिए कौन सा लगाना पड़ेगा? कनकेव लेंस. तो ए का बनेगा 4, है ना? ए का क्या बनेगा? 4. तो अब इसको करेक्ट कैसे करना, मतलब चॉइस कैसे देखोगे? तो कौन सी चॉइस में ए में 4 आ रहा है? या तो इन चॉइस ए या चॉइस सी, मतलब बी और डी तो हो ही नहीं सकते बेटा. ये आंसर्स ऐसे करने हैं. अगर आप अपना एग्जैक्ट ढूंढने लगे, आंसर मिलने में देर लगेगी. यू विल लूज द टाइम, यू नीड टू सेव द टाइम. तो हमने देख लिया, या तो ए है या सी है. ओके, अब थोड़ा आगे देखते हैं. बी डिफेक्ट कह रहा है वो लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस. हाइपरमेट्रोपिया में इट इज करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस. So B should be going to 3. Okay, B goes to 3, and here B does not goes to 3. लो, ये तो मैंने धीरे धीरे कराया तो टाइम लगा. जब आप खुद करोगे based on this concept, answers will be following very quickly. जल्दी जल्दी आएंगे. Okay, so based on this logic, yes, किसी ने बोला है answer is A. Answer is choice A. 4, 3, 2, 1. तो जो है सो है. Whatever is there, it is there. Clear? मुस्कान, खुशी, सोमन. Okay? चलो, आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. If the focal length of the biconvex lens is 25 centimeter, then the power of the lens is. We'll calculate it. We know power of the lens is given by 1 by f. But please understand, diopter is an SI unit. Focal length is given in 25 centimeter. It needs to be converted into meters. So I am converting it into meters. ये 100 जाएगा ऊपर, आंसर आ गया 4. इतनी भी खुशी की बात नहीं है, मतलब इतना भी हैप्पी मत होइए कि आंसर आ गया. Now you will have to decide it is +4 diopter और -4 diopter. आपने तो सिर्फ 4 निकाला है. इसको सुनो ध्यान से. 4 तो आ गया 1 by f से. आपको कैसे पता लगेगा आंसर इज +4 और -4? Now here is the concept, remember this. For convex lens, लिख लीजिए. For convex lens, focal length is positive. Power is also taken as positive because it is just the reciprocal of focal length. Yeah, answer is A now. And for concave lens, focal length is taken negative. That means power is also taken negative. तो अगर convex की जगह क्वेश्चन में instead of convex it was concave, answer would have been negative, but here the answer will be positive because it is a convex lens. It is a convex lens. For convex lens, focal length is positive. Okay? Remember the concept. ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, अगर ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आया, आता रहता है. क्लियर? चलिए शाबाश. नेक्स्ट है ये.
Okay, again a statement based question. Let's try to solve this out. It is based on the reasoning and assertion. तो reasoning and assertion में statement हमने पहले भी question किए होंगे आपने. Statement 1, convex mirror is used as a driver mirror. सही है, यही तो सीखा है हमने, कल सीखा था ना rear view mirror. तो सही है, statement 1 सही है. Images formed by convex mirror are diminished in size. वो तुमको एक डायग्राम याद दिला दिया मैंने. So it is also true. Both these statements are true. T, T. And this is also explaining. ये इसको समझा भी रहा है. तो आंसर बन जाएगा choice A. Assertion is true. Reason is true. Reason is explaining the assertion. Answer will be choice A. Both these statements are individually correct. देखो क्या लिखा हुआ है. Both these statements are individually correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. वो statement 1 को समझा रहा है, statement 1 को explain कर रहा है, and that is the reason convex mirrors are used for the rear view driver mirror. Got this? See, knowledge होगा, answers अपने आप आएंगे, थोड़ा सा बस आपको practice करनी है, which we are doing it. All done? Yes, yes, yes. Let's go to the next one. Question number 48. Try to answer this. To obtain the powerful parallel beams of light from a vehicle's headlight, one must use. ये मैंने diagram last time भी बनाया था. I mean, जब हमने कल मिले थे. Headlight. Do you remember the headlight of the car? I told you there is one lamp at the center. And then rays of light are going out of this like this. तो यहाँ पे parallel rays of light निकल रही हैं बाहर से. This is a beam of light. We said the mirror should be concave. थोड़ा सा इसको parabolic shape दिया जाता है. Knowledge ले लो थोड़ी सी. It is parabolic concave. It is not exactly concave. See the shape. It is little like a parabolic. It is little bit like a parabolic headlight. So the answer would be one must use concave mirror. It is curved inwards. Okay? No plane mirror, no convex mirror. It is concave mirror that we use. चलिए, यहाँ पे भी मेरे को clear का sign मिल गया. Let's move to the next question. I drew this diagram last time, that is yesterday. I drew the diagram of telescope. I told you there are two lenses in the telescope. One is the objective lens, one is the eyepiece. Okay, now tell me how it is used. Concave mirror तो नहीं लगता telescope में, lens लगता है. So I use two convex lenses. So the answer would be B or D. Do they have equal focal length? No. Which is having more focal length in the case of telescope? Objective. लिखवाया था. F0 is greater than FE. So based on that, answer would be choice D. NDA में आया हुआ question है ये. सारे आए हुए questions कर रहे हैं हम. ये कुछ popular questions हैं जो आते रहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ. Clear? Yeah, now students are agreeing D. Two convex lenses of unequal focal lengths. Next touch. Let's proceed to the next one. This question appeared as it is in NDA. बिल्कुल ऐसे आया था. The mirror used for the headlight of a car is. अभी बोला concave. See, concave में now there are two choices. Spherical concave or parabolic concave. It is a parabolic concave. मतलब ये तो पता था concave है. Now this is also a little bit sometimes confusing. Spherical or parabolic. It is parabolic concave. Shape is just like little bit parabolic. I hope it is clear. ठीक है, अभी किया हमने. चलो. So this is done. Let's go to the next question. Yeah.
This also appeared as it is, so I just picked the question direct from there, from the exam. Read the question. Yellow color light is used as fog light because, आपने देखा होगा विंटर्स में फॉग लाइट मोस्टली जो गाड़ियों में लगी होती है उसका कलर क्या होता है, येलो कलर. नाउ दे आर आस्किंग व्हाई द येलो कलर इज यूज्ड. Why would you want to use some different color of light in fog? You don't want scattering to take place. अगर स्कैटर हो गया फिर दिखेगा नहीं कुछ. नो स्कैटरिंग. तो वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए स्कैटरिंग कम होने के लिए, है ना. बोला था वेवलेंथ कम होना चाहिए स्कैटरिंग होने के लिए. तो ए तो आंसर नहीं हो सकता. चॉइस ए इज नॉट द आंसर. चॉइस बी हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग ऑल द कलर्स. यू कैन नॉट से दैट रेड कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. येलो लॉन्गेस्ट नहीं है, तो बी भी नहीं हो सकता. सी पढ़ते हैं जो. इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग ऑल कलर्स एक्सेप्ट रेड एंड ऑरेंज, but the red color is already used for brake light and stop light, whereas orange color is avoided due to the similarity with the red. You won't believe it. This is the answer. This is the answer. अब वो इतनी इंग्लिश में, तो मैं सिंपल इसको ट्रांसलेट कर दूं. वो ये कह रहे हैं कि रेड इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि रेड तो डेंजर साइन, स्टॉप लाइट, उन चीजों के लिए हमने रिजर्व रख लिया. ऑरेंज हम इसलिए नहीं यूज कर रहे कि ऑरेंज का कलर कई बार बहुत सिमिलर हो जाता है रेड के लिए. येलो इज अ लाइट विच विल बी वेरी डिफरेंट, तो दूर से दिख जाएगा. इट्स अ फॉग लाइट. एंड यस, स्कैटरिंग कम करनी है तो येलो कलर ही यूज करना पड़ेगा. आई होप यू रिमेंबर आवर स्पेक्ट्रम अगेन. विजिबल स्पेक्ट्रम, वेब गया. रेड हो गया रिजर्व, ऑरेंज इसके बहुत पास है तो ही नहीं यूज कर सकते, इसलिए वी यूज येलो कलर फॉर द फॉग लाइट. अब समझ में आ गया? अभी क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर. रेड इज रिजर्व्ड फॉर डेंजर साइन, रेड साइन, व्हाटएवर. ऑरेंज इज वेरी नियर टू रेड, सो वी प्रेफर टू यूज येलो. चलो, फैंटास्टिक, ऑल गुड, गुड. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. A human eye is like a camera. कल पढ़ी थी हमने human eye, and it contains a system of lens which we also know. The eye lens forms. It is a convex lens. It is a convex lens. मैं यहाँ पे इसका ray diagram बना दूँ. Really sorry for that. Yeah. Let me draw the ray diagram for the human eye. कल हमने क्या सीखा था? It is a convex lens. बनाइए जी. मान लो ये हो गया आपका human eye का lens. One object is placed here. Straight ray of light will pass through its focal point. One ray of light will pass through the optical center. This is how the image is formed in eye. This is how the image is formed in eye. If height of the object is h, image will also appear as h. हमें मैग्नीफाई होकर नहीं दिखता. बाकी काफी चीजें हैं, अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे. रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का है. रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का है. And the image of the object is formed on the retina, that we also know. So choice C. Inverted real image of the object on the retina. Clear? So human eye just works like a convex lens. Just for your knowledge. फिर आप बोलोगे सर हमें सीधे क्यों दिखाई देते हैं लोग, हमें ऑब्जेक्ट्स उल्टे क्यों नहीं दिखाई देते? दिमाग सीधा करता है उसको. Our brain turns it into a real image, proper image. ठीक है, वो फिर बाद की बातें, बायो का ज्यादा पार्ट हो जाएगा. ये हमारा पार्ट हो गया. चलो नेक्स्ट आइए. चलिए क्वेश्चन नंबर 53. An optician prescribes a power of -0.5 diopter. Power is negative, focal length is negative. अभी सीखा था that a negative focal length means it is having a concave lens. Then power will be by definition 1 by f. तो f क्या हो जाएगा? 1 by p. Put the value, it is in diopter. 1 by 0.5, 10 ऊपर जाएगा, focal length आ जाएगी 2 meters. Focal length, how much focal length do you get? 2 meters.
Now that means it is a concave lens. It is a concave lens of focal length 2 meter. Which choice is fitting in? Which choice is fitting in? I think C is fitting in. Concave lens of focal length, sorry for that, 2 centimeter. Okay. So we are getting a concave lens of focal length 2 centimeter. Any doubts? At least this should be clear. What is the relationship between power and focal point? Oh, sorry, focal length. Which lens is having negative focal length? Which lens is having positive? याद रखिएगा. Convex का focal length is positive. Concave focal length is negative. Lens. I'm talking about lens. Clear. एक ना अभी बात दिमाग में आई, मिरर्स की फोकल लेंथ क्या होगी फिर? वैसे बात करता हूँ. टाइम है थोड़ा सा हमारे पास. It's almost getting over. What about the mirrors? लेंस का तो समझ में आ गया. अब मिरर्स की थोड़ी बात करें फोकल लेंथ की, बिकॉज क्वेश्चन तो इस पे भी बन सकता है. तो concave mirror लेते हैं. Which mirror I have taken? Concave mirror. Okay. If you go for the concave mirror, parallel ray of light will be focusing at this point. Focal length is measured from its optical center at this point. तो लाइट फोकस होके वापस आ रही है ना? लाइट फोकस होने के लिए वापस आ रही है. So distance is measured in the opposite direction. So here also focal length will be taken negative. Sign conventions थोड़ा याद रखिएगा. ठीक है. ऑप्टिक्स के साइन कन्वेंशंस हम करते थे ना क्लास 12th में ऐसे. ठीक है. So what used to happen? Anything on this side is taken as positive. Anything this side on taken is negative. तो कहीं पे अगर फंस जाओ, it helps you a lot. Okay. बाकी आप निकाल लोगे, डोंट वरी अबाउट इट. कन्वेक्स का ऐसे तो कन्वेक्स का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. कन्वेक्स का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. ओके. चलो, तो यहाँ थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा था. नेक्स्ट टाइम the spread in colors in rainbow on sky is primarily due to mainly what white light is splitting into 7 colors: violet, indigo, blue, and so on. White light is splitting into 7 colors. It is primarily due to dispersion of the light. Dispersion of light actually means splitting of light into its 7 colors. A. Great. ठीक है जी, याद रखिएगा इसको. Let's move to the next one. Questions are coming now on rainbow, and I did talk about rainbow in the last lecture. तो जिन्होंने नहीं देखा, please go through it. A beautiful rainbow on the sky is due to. Explain the process. समझाया था ना? पहले क्या होगा? Refraction, फिर dispersion, फिर reflection. तो कौन सी चॉइस फिट बैठ रही है? It's only dispersion? No. और भी बहुत कुछ हुआ है बीच में. रिफ्लेक्शन भी हुई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुई है, फिर रिफ्रैक्शन भी हुई है. सो देयर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड: रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Whatever it is taking, it could be reflection according to the answer. So based on that, answer इसका बनेगा choice D. It involves refraction, it involves dispersion, and it also involves reflection of sunlight from a water droplet only. हाँ, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, तो मोस्ट ऑप्टिमम आंसर निकालना पड़ेगा. तो मोस्ट ऑप्टिमम आंसर ये बनता है. वाटर रेनबो बनने के लिए 3 प्रोसेसेस आर देयर: refraction, total internal reflection, and dispersion of light. So I think it could be missing also, क्योंकि टाइप किया हुआ है. हो सकता है वहाँ पे लिखा हो total internal, तो यहाँ according to वही आंसर होगा इसका. ठीक है. चलो, तो रेनबो बनाना आ गया, समझ में आ गया रेनबो कैसे बनता है. नेक्स्ट आइए जी. ये तो अब आप बता दोगे आराम से. अब देखो कंप्लीट होने जा रहा है चैप्टर, बस वी आर समिंग इट अप. During sunrise and sunset, sun appears reddish orange because
Red color scatters the least. Which perfectly suits this. Reddish orange light is least scattered by the atmosphere. Least scattering होती है. Least scattering. So C is the answer. Got this? So let's move to the next one. प्रिज्म में डिस्पर्शन का क्वेश्चन है, आओ पढ़ ले थोड़ा सा. White light while passing through a glass prism breaks into different colors because dispersion हो रहा है. बट अभी पूछ रहा है डिस्पर्शन क्यों हो रहा है, क्यों बन रहे हैं उसके 7 colors violet to red. The reason is actually refractive index is different for every wavelength. ये हर एक को पता है, याद रख लो, नहीं पता है. Refractive index of the glass is different for every wavelength. Due to that, light separates out into different colors. तो कौन सा choice fit बैठ रहा है? Glass for different colors of light is different. ये fit तो बैठ रहा है. और थोड़ा एक और आगे पढ़ ले. Glass prism absorbs white light, ऐसा कुछ नहीं है. Total internal reflection की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे. No, we are not talking about that. Interference of different colors inside. No. छोड़ो उसको बस. वैसे मैंने पढ़ लिया. मैं अगर देख लूँ कुछ और लिखा ना हो. Based on that, answer is A. Refractive index of glass for different colors of light is different. A option is right. Soman, Khushi and others. I hope it is clear. Muskan. चलो शाबाश, great. आओ जी आगे चलें. Let's go to the 58th question. Okay, consider the following statements. Oh, sorry, थोड़ा ऊपर ले गया. Wait. Oh, it's fine. A real image. Statement 1 says a real image can be formed on screen. तो सही है. देखो मैंने बहुत, it's like 3rd or 4th day today. Real image will be only formed if real rays of light will meet. Light का मिलना जरूरी है. तो screen is the possibility. तो real image को screen पे बनाया जा सकता है. Real image can be formed on the screen. मूवी थिएटर में जो भी आप देख रहे हैं, these are all real images. लाइट आ रही है ना प्रोजेक्टर से, पीछे प्रोजेक्टर से लाइट आती है. एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट द एग्जैक्ट, समझाने के लिए. हाँ तो ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओके. रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. रियल इमेज इज ऑलवेज मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड. इट इज अ डाउटफुल स्टेटमेंट फॉर मी. लेट मी शो यू द वन डायग्राम हियर. मैंने पहले भी बनाया था. Let us say this is a concave mirror. concave mirror ले लिया, इसको रख दिया इसके ऑप्टिकल रेडियस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर है इसका, ठीक है, सी पे रख दिया, सेंटर ऑफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर. पैरेलल रे ऑफ लाइट गोज, इट passes through focus. Light goes through focus, it becomes parallel. Image is formed of the same size. If it is H, it is also H. Yes, it has been inverted, and believe me, real images will be mostly inverted. In fact, are inverted. अगर single setup की बात करोगे, but कोई गारंटी नहीं है कि वो magnified ही होंगी हर बार. यहाँ पे height same बनी है. They are having the same height. So it is of same height, or it is of same, you can say, dimensions, but it has been inverted. So statement 2 is not correct. ये सही नहीं, हर बार magnified नहीं हो सकती. हाँ, inverted होगा, that is fine. So based on that, answer is choice A. A very small, it appears a small question, but it is a very good question. He is now asking you, tell us the combinations, how the real image is formed. Okay, so it helps you then. Good, shabash. Let's go to the next question. In optical instruments, the lenses are used to form image by the phenomena of. He is basically instruments means mostly telescopes and microscopes. If we talk about our syllabus. So कौन से लॉज लग रहे हैं वहाँ पे?
there is no reflection. We are always saying lights are passing, then refracting, उधर जा रही है, image बना रही है. सीधा सा आंसर है इसका, don't worry. They are based on the principle of refraction. Yeah, good, Somanpreet, choice B is the answer. They are mostly based on the laws of what? Refraction. Okay? So, let's go to the next one. Optical glass used in the construction of spectacles is this has been a very debatable question. Why it is a debatable question? Because जब ये question exam में आया था इंडिया में बहुत साल पहले आया था, बहुत साल पहले, तब इतने टाइप के ग्लास होते नहीं थे. अब spectacles जो चश्मा हम पहनते हैं, we have lot of glasses, plastic glasses, ultraviolet protected glasses, so on. But when this question came, then there used to be concept that all of the optical instruments will be made by flint glass. Flint glass. It's just a general knowledge question. It is just a general knowledge question. No concept involved in this. Okay? हाँ वही मैंने बोला ना, आजकल तो हम क्रूक्स ग्लास भी यूज करते हैं लेंसेज के लिए. ये क्वेश्चन आया था उस सेंस में कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस ग्लास से बनते हैं. सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब ये क्वेश्चन आया था, दैट टाइम द आंसर वाज फ्लिंट ग्लास. That time the answer was flint glass. और अभी भी अगर वो तुमसे specifically पूछ लें, optical instruments are designed by using which glass? Flint glass. Okay. So considering the timing of this question when it came in the ND exam, it was flint glass. Okay. Now we have variety of glasses. अभी आप वो चले जाओ Titan Plus पे कहीं पे भी चले जाओ, they will give you variety of glasses for your spectacles. ऐसा कोई एक ग्लास नहीं जिससे बनता है. ठीक है जी, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इट विल नॉट कम, इट हार्डली रिपीट्स. दिस क्वेश्चन हैज हार्डली रिपीटेड. एक बार आया था बस. ये नेक्स्ट टाइम. A ray of light travels from a medium of refractive index n1 to a medium of refractive index n2 if the angle of incidence is I and the angle of refraction is R. He is asking you the Snell's law of refraction. थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के समझा दूँ आपको. Refractive index n2, let us say, just a second. Yeah. Let me say refractive index is here n1. This is what I wanted to write. ये हो गया n2. A ray of light enters. This is the normal. मान लो जा रही है rarer to denser. Rarer. मान लो कहाँ जा रही है? It is going to denser medium. Rarer to denser, it bends towards the normal. इधर को आएगी. ये भी पता होना चाहिए. इसके ऊपर भी बेसिक क्वेश्चंस आते रहते हैं. A ray of light if moves from rarer to denser, it bends towards the normal. If it was going from denser to rarer, it will go away from normal. उधर को चली जाएगी वो. तो law of refraction क्या बनेगा? कुछ बच्चों ने बोल दिया आंसर. ये है angle of incidence. This is angle of refraction. Law of refraction is pretty much simple. Sin I is asking sin I by sin R. By sin R is inversely proportional to the refractive index. So it will be n2 by n1. Choice C is the answer. This is also known as Snell's law. This is also known as Snell's law. Sin I by sin R is equal to n2 by n1. It is a big topic, optics. It took us around 3 days now. We are almost at the end of it. आओ बस खत्म करते हैं इसको. 5 मिनट बचे. Light waves projected on oil surface show 7 colors. कभी देखा वो oil ऐसे surface पे गिराओ? There you see some colors shining through that surface. The answer is interference of light. Remember it. Now that involves formation of maxima, minima, everything. That used to be the wave optics part of class 12th. वो इतना syllabus में NDA में नहीं है अभी. ठीक है? Mostly they are dealing with ray optics and all other stuff. So but here answer is interference. Interference is the phenomena. ठीक है जी? याद रखिए. Interference of light. Okay, let's go to the next one. Light waves are electromagnetic waves. Every light wave
be it infrared radiation, be it violet, indigo, blue, so on, red, they are all part of the electromagnetic spectrum. So that means they all are electromagnetic radiations. Okay, and that means they are all electromagnetic waves. So choice B is the answer. Yes, Kushi, you're right in this. So light waves are which kind of waves? Electromagnetic. They constitutes both electric field and magnetic field. Okay. So I think we are just rounding it out. An object is placed 10 centimeter in front of convex lens of focal length 50 centimeter. The image produced will be. I will need to draw the ray diagram. I cannot answer it without the ray diagram. Or बनाएं. This is a lens, a focal length, convex lens, sorry, having focal length somewhere here. उसने बोला ये focal length इसका कितना है? कितना है? 15 centimeter. But object is kept between this. When this happens, this goes through its focus. This passes through this. अब इधर तो इमेज बननी से रही, इमेज कहाँ बनेगी? पीछे जाके यहाँ कहीं बनेगी. This is as good as your simple microscope also. So image definitely is not real. Real image कब बनती है? When the object is behind the focal length of the lens. So it is virtual and magnified. Shabash Muskan, great answer. This is little, I mean, जब तक knowledge नहीं होगा इसके answers नहीं आएंगे, ये भी बता दूं मैं. Okay, when the object is between the focal length and the lens, the image formed is virtual and magnified. Object को लेके आओ पीछे, फिर image बनेगा उधर, जो inverted बनाते थे हम. याद रखिएगा. Expected questions हैं ये, highly probable questions हैं optics में से अगर कुछ आता है तो. Clear? Great. Next आइए. Question number 65. Okay. And I think this is the last question for today. 65 questions are totally questions which we are going to answer. Optical fibers, though bent in any manner, मैंने बोला था ना optical fiber पे question आ सकता है, तो ये एक बार discuss कर लेते हैं. Allows light to pass through it. What is the inference? What is the inference that one can draw from it? Optical fibers work on the principle of total internal reflection. अभी we just understood. अभी पढ़ा था. Which choice fits in? The concept that light travels in straight path is wrong. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. This answer is wrong. Light can flow through the optical fibers. Wrong. Light can travel through the fibers because of their ductility. That is also wrong. Light can travel through the fibers due to multiple total internal reflection. That is the answer. Choice D is the answer. Light travels in optical fiber due to what? Total internal reflection. Okay. So my dear cadets, this is it for the NDA optics. We have covered all of the important topics which are relevant to the syllabus of NDA from the point of view of physics. You could have seen the questions also ranging from image formation to rainbow to total internal reflection. All the concepts have been brought to you. So we will be hoping that it helps you and you score good in the coming NDA, that is on Sunday. ठीक है जी, तो अपना best दीजिए. God bless you all. Wish you good luck from whole team of CDA. Bye bye, take care.